Breaking news now coming in. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has taken to Twitter. He says, and I quote, "The victory is a result of the successful leadership of the BJP and the tireless hard work of our dedicated workers and the good governance that has been established by the BJP government of double engine." He's thanking the people of Rampur as well for the over 40,000 margin victory that is handed out to the BJP candidate in a Samajwadi Party bastion. It is setback for the Samajwadi Party and Akhilesh Yadav in both its strongholds. What are the takeaways? To decode that, we have political analysts Karan Verma and Dushan Nagar with us on this broadcast. R. Rajgopalan, senior journalist, also with us. But I want to ask my first question to the spokesperson of the Samajwadi Party, Kapish Srivastava. क्या हो रहा है सर? क्या लगता है आपको? क्या कमी रह गई थी समाजवादी पार्टी में? आपके गढ़ माने जाते हैं दोनों, रामपुर और आजमगढ़, दोनों जगह पे आप अपने कैंडिडेट्स को जिता नहीं पाए। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने ये जो चुनाव लड़ा है, समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से चुनाव नहीं लड़ा है, ये शासन और प्रशासन से चुनाव लड़ा है। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन आपने देखा होगा कि तमाम वीडियो सामने आए, हमारी कंप्लेंटें रहीं, चुनाव आयोग से हमने कंप्लेंट करी, बावजूद उसके सुनाई नहीं हुई। तमाम अल्पसंख्यक क्षेत्र ऐसे थे जहां पे पुलिस का पहरा लगा दिया गया था, जहां पुलिस प्रशासन लाठी डंडों के साथ उपस्थित थी और साथ ही साथ कितने लोगों को नोटिस थमाई गई थी। उनके पास पर्चे थे, वैलिड, उनके पास जो है वो निर्वाचन आयोग का कार्ड था, उनके पास आधार कार्ड था, आइडेंटिटी कार्ड था। बावजूद उसके अगर मतदान स्थल तक उनको नहीं जाने दिया गया तो देश का लोकतंत्र किस तरीके से सुरक्षित माना जा सकता है। दूसरी चीज, आज आप सुबह It was one candidate of one party fighting not another candidate on a level playing field, but an entire administration. No wonder we lost, says the Samajwadi Party. Look, this is the reason why Samajwadi Party is reduced to the political margins in UP. They never introspect. They want to blame the environment. They want to blame the veracity of the elections, the authenticity, but they never want to look within. Today is a historic victory because these were considered to be Samajwadi Party's bastions. And I want to draw your attention to what happened in Rampur. You know, BJP is very good at their ground game. There's no doubt about it. And also selecting candidates. Ghanshyam Lodhi is someone who was from the Samajwadi Party initially. He was a loyalist to Azam Khan, but was slowly veering away from him. And the way BJP thought that he could be a probable candidate there, you have to hand it over to their ground team. Of course, they have a governance model. Of course, they have a very strong narrative, which is nationalistic, which is welfare schemes, etc. But look at their ground game. Their volunteers, whether it's the heat of the sun, whether it's winters, whatever, they show up. They show up and they ensure that their votes are counted. People come up. If you can't compete with them at the ground game, there's no point crying over sour milk or being sour grapes here. The fact is they won. And you have to look within and regroup. Absolutely. There is a problem, Dushan Nagar. The sooner you acknowledge that, the sooner you'll come to a solution. BJP gained more ground than they did last time around in the assembly elections. Now two strongholds in the Lok Sabha bypolls also have been lost to the BJP for the Samajwadi Party. There are issues within the party as well, and that is the rift within the family. Akhilesh wasn't present. He did not campaign for these candidates. He was barely available to them. Something that several Samajwadi Party leaders have also spoken about openly. Can they completely dismiss that and just say that this wasn't level playing field, which is why the BJP has won? Dushanji is left pretty much like Samajwadi Party. We'll try and reconnect with Mr. Nagar, but Mr. Kapish Srivastava, would you like to answer that? Can you completely dismiss the problems that ail your party? कुछ तो कमियां होंगी पार्टी में भी। काफी सारे समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता, काफी सारे नेता बाहर आके कह चुके हैं कि पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं। अखिलेश यादव को जितना होना चाहिए अपने प्रत्याशियों के लिए उतने होते नहीं है। He is missing, many of them say. नहीं, बिल्कुल कदापि ऐसी कोई बात नहीं है और ये स्पष्ट सी चीजें हैं जो ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के स्पोकपर्सन। मैं उनसे इसलिए सहमत नहीं हूं कि वो सहमतता इस बात पर जारी कर रहे हैं कि जो लोधी साहब पहले हमारी पार्टी में हुआ करते थे या आजम खान साहब के बहुत करीबी थे, आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो वो इस वजह से जीत के माध्यम बन रहे हैं ना। ये गलत है। मैंने आप
को पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा कि जब आप मतदाता को रोक लेंगे, मतदान नहीं कराएंगे, तो लोकतंत्र की हत्या तो आपने वही कर दिया। और ये हमने डे ऑफ फर्स्ट जब हमारा इलेक्शन प्रारंभ हुआ था, उस समय इनकी पुलिस और प्रशासन ने जिस तरीके से तांडव मचाया है, ये उसका नतीजा है। दूसरी चीज मैं समाजवादी पार्टी देयर सेज ये लोकतंत्र की हत्या है, दुष्यंत नागर, but the BJP on the other hand, Amit Malviya has just taken to Twitter, and that tweet is on your screens, viewers. He has just gone on to say that this in fact marks the end of the SP's regressive minority appeasement. The fact that you couldn't even retain 2 of your strongholds means that your kind of politics is over. Now is the politics of Vikas and development that the BJP has been giving to the state. की बात कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता बताएं कहां विकास हुआ है। नौकरियों के लिए तो युवा आज भी मारा फिर रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, आपकी हर स्कीम को रिजेक्ट कर दिया गया है, आपने सबको ठेकेदारी पे लगा दिया है, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, आपने वोट डालने के लिए और वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे। आज भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है। 2 सीटों के लिए आपने पूरा लोकतंत्र को दांव पे लगा दिया, ये ठीक नहीं है वर्मा जी। करण जी, ये सोचने की जरूरत है, आप जो लच्छेदार बातें कर रहे हैं उससे कोई सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सच्चाई सबके सामने है। आज देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, रोजगारी घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आयात बढ़ रहा है, डॉलर की रुपए की अपेक्षा में देखिए क्या हालत हो गई है। So to hide under the guise of what? That's really the question, because R.S. Gopalan, both sides claim that it is the other side, that one says that you're trying to hide behind your failures and now crying over spilled milk, while the other says that you've put the entire democracy and the democratic process in this country on auction. पूनम जी, एक चीज है, ये दोनों सीट में जीता है, ये आजम खान का आशीर्वाद है बाजा का ऊपर। आजम खान आदमी ने तो बाजा को वोट दिया है। ये आपको जो समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन को पता है, लेकिन वो बोलेगा नहीं है। शिवराज साहब को एक धक्का मिला है, आजम खान का वोट सारा बाजा को मिल गया, क्योंकि ट्रिपल तलाक में बाजा का जीत किया है। प्लस उज्ज्वला स्कीम में सारा मुसलमान को वोट मिला है, बल्ब मिला है, सारा खाना मिला है, जो कोरोना टाइम पर प्लस उनको टॉयलेट मिला है। ये तो रिपीट हो रहा है। इसीलिए मुझे लगता है मुसलमान को वोट में परिवर्तन आने वाले हैं, भाजपा को पास जा रहे हैं। सेकंड थिंग, जो दुष्यंत नागर साहब ने अभी बोल रहा था, मेरा खास दोस्त है, ये राहुल गांधी के अलावा दुष्यंत नागर चीफ मिनिस्टर को जो कांग्रेस को चीफ बन जाते ना, वो कांग्रेस कम से कम 10 सीट निकालती है। लेकिन जैसे कांग्रेस गायब हो गया, ऐसे दुष्यंत नागर भी वीडियो से गायब हो गया बीच में, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो गया। आप कृपया बताइए, जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है, जो शिकायतें आई हैं और जो मीडिया के पास में मौजूद है, क्या ये ठीक है? लोकतंत्र ऐसे ही चलेगा? जो वैलिड वोटिंग आई कार्ड लेके गए, महंगाई हुआ है, भाजपा जीत रहे, उनको बदल दिया गया, लेके आ जाओ, भाजपा जीत रहे, कांग्रेस किधर है? 2 सीटें ज्यादा कम करने से सर क्या फर्क लगता है? अरे कम से कम लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए। आज ये तो लोकतंत्र की अस्तित्व की बात आ गई, वजूद लोकतंत्र का बचेगा या नहीं बचेगा, लोग ये सोच रहे हैं। ये ठीक नहीं है राजा गोपालन जी। Is the argument of saving democracy convenient, Karan Verma? Because if the candidate would have won, then I'm sure they would have hailed this democratic process of, look how the BJP may have tried all that they could, they may have used all the means at their disposal, and yet we won. But now that we haven't, let's talk about how this wasn't a level playing field. Look, BJP has not won every single election. They have lost so many elections. What do they have to say about that? They lose so many elections. They lost in West Bengal last year. They've lost some of the bypolls today also. So let's not be generalized in saying democracy is dead. दुष्यंत जी बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, पता नहीं ऐसे क्यों बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है और ये है. In fact, if I tell you, today is a day where democracy is strengthened because it sounds the death knell for minority appeasement. I'm telling you this, whether it is Azamgarh or Rampur
The Muslim youth of today are sick and tired of the bad publicity that goes out. Azamgarh, unfortunately, over the years has become famous for gangsters. They want to get rid of this tag. They want to join the development agenda. They want to be progressive. They want to look at the future. So this is, if anything, a sign, a positive sign towards a maturing democracy, where minorities are not going to be held to ransom by a certain family or a certain bastion. They have their own free will and they are going to vote for something progressive, whether it is BJP or not BJP tomorrow. Right. So it's a sign of a maturing democracy from where I see it. And you must have that much faith in the voter that you put your faith in to give you the votes. If they haven't and they voted for someone else, then perhaps that calls for introspection as well, because that's only going to be a learning curve for not just the Samajwadi Party but all other political players as well, perhaps the BJP in some other states like Karan Verma was pointing out. But I thank you all gentlemen for joining us here on this broadcast. We do hope and we are of course awaiting a response from Akhilesh Yadav as well, as both those strongholds of his party have now been wrested by the BJP. We will keep a track of all the developments in Uttar Pradesh and the Bypoll results and their implications in other states as well. But a quick break on this edition. Back in just 2 minutes.